Okay. Are you able to hear me now? Are you able to hear me, guys? Yes. I'll just check whether you are able to hear me or not. Welcome to the live stream, guys. Are you able to hear me? No? Please write in the chat box. Are you able to see, guys? Please write in the chat box. Good evening, good evening. Very good evening. Very good evening, guys. So, guys, actually, today I have come live on YouTube because, sometimes I get some questions from YouTube saying that sir, tell me how to learn speaking English. So, in this regard only, I have come. And guys, if you have any question, just type in the chat box. Very good evening to all of you. So, guys, actually, I'll just tell you. First of all, you need to be consistent. Whenever you are planning to learn English, then make plan for that. Like, what is your goal? Set your goal. So once you set the goal, like you need to learn English in next 30 days, 90 days, 60 days, like that, then
You can just divide into the days. Like everyday activity you have to divide. जब आप हर दिन का एक्टिविटी डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है. एंड once you make the plan, once you divide the work, divide the activity for daily basis, then you need to work on that. गाइस आप चैट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया आता है, मैं कहता हूं कि वो आइडिया जब तक बिल्कुल बेकार है, जब तक उसके ऊपर कोई काम ना किया जाए. राइट गाइस, डू यू एग्री विद दिस? यस. So this is the thing, that is why we are not able to speak English, or why we are not able to learn English. We want to learn English, but you know what is the problem? Problem is implementation. We can plan, okay, we will learn English speaking, but after a few days, like 3 4 days, 10 days, we are not able to continue on our task, on the practice. So guys, if we do not practice, then it is not possible. Like it is not possible that how can you learn speaking English? So if you are really, if you are really willing to speak English, willing to learn how to speak English confidently and fluently, then you need to work on that. You need to take action every day. Just divide into the action into daily work, daily task, and work on that. Once you make the list, once you make the to-do list, then you don't need to think about it whether you need to do it or not. You need to go ahead and do the work for today. If you do it for every day, then one day you will be able to speak English confidently and fluently. Right, guys? So work on that. And there are few points, like only few steps to learn speaking English. One is you need to know the phrases. Initially, you should not go behind the grammar, because if you learn the grammar initially, then it is very difficult, because once you learn the grammar, you will start translating that. So, if you translate from Hindi to English, you are gonna make the mistake. So, my suggestion is, my advice is, like, do not translate from Hindi to English. So, speak English like an English. How can you speak? आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं? इंग्लिश को इंग्लिश की तरह कैसा बोल सकते हैं? इंग्लिश को इंग्लिश की तरह इसलिए, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ऐसा बोल सकते हैं कि आपको विदाउट नोइंग ग्रामर यू नीड टू मेमोराइज द फ्रेजेस, एवरीडे इंग्लिश फ्रेजेस. सो अगर आप एवरीडे इंग्लिश फ्रेजेस आप अगर देखते हैं, तो एवरीडे इंग्लिश फ्रेजेस को आपको मेमोराइज करना है, लर्न करना है, यूज करना है. और जब आप उसे यूज करते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में, देन you will be able to do it. Right, guys? You will be able to do it. So, guys, whatever is your question, you can ask me. And huh. So that is the first point. The second point is, like you need to learn the vocabulary word, new vocabulary. And I'm not asking you to, memorize the word, because if you learn the word,
and you will learn the second word, then you will forget the previous one. So the first, the best practice is like you need to learn the word and you need to learn how to use these words in the sentences or in examples. Okay, guys. So once you do that, that is absolutely good because you will be able to use that and you are not going to forget these words. So every day you can learn few words and you can use few words in your sentences. Suppose you have learned only 5 words today, right? So once you learn 5 words, you are going to make at least 5 sentences for each word. Once you do that and start speaking in your daily speaking, whenever you are talking in English to anybody, and you can use these words, you can use these phrases, whatever you have already learned in your speaking. So when you do that, you will be able to practice because this is your practice, everyday practice. And the more you speak with the live people, the more you learn. Right, guys? Third one is listen more. You need to listen English. You can listen with the videos, video clip, audio, podcast, or you can listen uh, to the interviews, right? So you can just do that and try to observe that. There is a difference in listening and observing. Whenever you listen, do not listen only, observe as well. While listening, you need to observe. Right, guys? So when you observe, you will find like there is something else and you will be learning something. So like you have to give your 100%, 200% for learning how to speak English. It is just a language. It is not like, oh, you cannot learn English. You can learn English. This is like Hindi only. So how you speak Hindi, you can speak English as well. Right, guys? So you need to take care of, like, you need to learn phrases, you need to learn new words, new vocabulary words, and you need to use them in your sentences. Okay, in examples. And third one is you need to listen the videos or audio, podcast, and you can listen like audio book, interviews. You can watch English videos like interviews in English. So while listening, you need to observe that. And suppose initially you say like, okay, you are not able to understand what they are saying. Then if you are watching that video on YouTube, you can, uh, that caption, no, you can on the caption, subtitle. You can watch that video with subtitles. Right, guys? So when you watch the video with subtitles, you will be able to understand that. If you are not able to understand in one go, then just replay that video once again and watch that once again, listen that once again and observe that whatever they are saying. Okay, guys? So do that. So this is one thing, like listening. And while listening, you can do one more thing, like whenever that speaker is saying something, just mimic them. That is called shadowing technique. So like whenever they are saying something, you also say the same thing. If they are saying some sentences, you also say that sentence. And you need to take care of like what you need to match. You need to match the same sentence. You need to say the same sentence. And you need to match their tone, how they are talking, how they are speaking in English.
And third one is like you need to match their accent. I mean to say pronunciation. Okay, so you need to pronounce the same way, how they pronounce the word, how they pronounce the sentences, right, guys? So once you do that, you will see you will see a huge difference inside you. And every day, that is not only like one day you have done and you all said no, it is not. You need to do it on daily basis. Practice whenever you get a chance to speak with anybody, just go ahead and jump into the conversation, right, guys? The In my community, there are students, they say, sir, we do not have anyone to speak in our neighborhood or in our like family, in my friend circle. There is no one speaking English. So don't worry, you can speak to yourself. Nowadays, we have this mobile, so we can use that mobile. We can record while speaking, while practicing the phrases, while speaking the new vocabulary, while thinking in English. We can record that in our smartphone, right? So when we do that, and we are recording this in our smartphone, so we can watch that, we can replay that, and we can listen these sentences, these phrases, how we spoke, and we can find our mistakes wherever we have made the mistake. So once we find that mistake, we need to improve that area, right, guys? Yeah. Yes, guys. So if you are watching this live, after it is completed, then please write in the comment box how is this, and so whether you are getting some tips or tricks, or on how to speak English, or if you have any question, you can always write in the comment box, because I love reading comments. Okay, guys. So whenever you have any question, you want to give any feedback, I am always open to the feedback. And guys, so if you have not subscribed the channel, please do consider subscribing my channel. So please do that. And whenever I upload the video on Wednesday, Friday, and Sunday, and I come live on these days only on YouTube. So please do that. And whatever the questions, and guys, if I have a gift for you, so in the end of this stream, I'm going to give you that gift, right, guys? So you can ask me your question if you have any question like this regarding the English. Okay, yeah, I was telling about these points, like how to speak English and how to learn that. So the next point is you need to speak on topic, and you need to take care of few points while speaking on the topic. Initially, suppose you are a beginner and you have completed your education with Hindi medium. So what you can do, you can just take few simple topics like myself, or your introduction, or my family, or my house, or my favorite color, any topic. And then how can you prepare for that? You can prepare for that, find some vocabulary for that, find some words for that, and start speaking on that topic, right, guys? Suppose you are talking about yourself. So you can say, hi, my name is this, whatever is your name, and what you do. You work as a teacher, you are a student, or whatever you are doing.
And where do you live? Where are you from? You say that. And then tell about your hobby. What do you do in your free time? So you can say these things, and that is about you. But what you need to take care of while speaking in English, you need to be confident. And do not think about perfectionism, whether you are, whatever you are saying, that is correct or incorrect. Do not think about it. Right? So whenever you are talking in English, be confident. Even if you make any mistake, don't worry. I want you to make mistake and go ahead, be non-stop. Whenever you are talking, suppose you just, take the challenge for 1 minute initially. You have to speak for 1 minute continuously, and you have to speak with confidence, non-stop. Even if you make mistake, be in flow. You don't have to stop. Unstoppable, right? So be unstoppable whenever you speak on a topic, be it any topic. Initially, you can start with easy, and then later on, you can go with the difficult topic. So take the difficulty level like from easy to hard, like that. Guys, if you have any question, you can write. I will take your question. Yes, if you have any question, you can just write that. Yes. So about grammar, initially, do not focus on grammar, but yes, later on, you can learn grammar as well. And like in grammar, you don't need to learn everything in the grammar. Okay. Only essential grammar you need to learn for speaking. It is not like everything you need to complete in the grammar. So like grammar, essential grammar means like you need to know the tense, what are the tenses, you need to know pronoun, you need to know noun, you need to know the part of a speech, and you need to know the modal verbs. These things you need to know. And you can start speaking. You should know what is the sentence structure. So what is the structure of the sentences? Okay, like subject, verb, object. These are the three things, which is the basic thing. And you need to, start with the basic. And because English, if I say English, English is a vast, because this is the language, right? And if you are not a native speaker, native English native, then that is the different language. This is the second language, right? Suppose your mother tongue is Hindi. So this is the different language, right? So this is the vast topic actually. English speaking is the vast topic. However, that is the language only. So do not worry that you cannot speak. You can speak definitely. There is no problem in learning English. As you are speaking in Hindi, you can speak in English as well. Okay. But the point is, you need to do the practice on daily basis. Every day you have to do it. Okay, guys? Yes. Phrases, what is the benefit of phrases? When you learn the phrases, even the small phrase, very, very like बहुत छोटी सी phrase, like come here. This small phrase is complete itself.
because there is no need to put the grammar rule or nothing like that. But that is absolutely correct. If you call someone and say, hey, come here, that is absolutely right. Right sentence, right? So learn with the phrases. Memorize few phrases. जरूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स आने चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी आप बोलना शुरू करेंगे, सारा वोकेबलरी आपके दिमाग में आ जाएगा तभी आप बोलना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपने जो सीखा है उसी को बोलिए, उसी को बोलेंगे तो आप शुरू कर लेंगे, और जैसे ही आप छोटा छोटा बोलने की कोशिश करेंगे तो वहां से क्या होगा कि आपकी हैबिट हो जाएगी फिर। और जब आप छोटा बोलेंगे तो फिर बड़ा सेंटेंस भी बोलेंगे। फ्रेजेस बड़ी भी हैं छोटी भी हैं तो उन्हें आप लर्न करिए। यहाँ पर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें फ्रेजेस भी डालता हूँ, तो उन्हें आप फ्रेजेस को देखिए, लर्न करिए, मेमोराइज करिए। कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिखिए कि यू लाइक दैट वीडियो। एंड मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें कि व्हाट इज़ योर टेक अवेज, लाइक आपने उस वीडियो से क्या सीखा। तो आप उस कमेंट में वो ज़रूर लिखिए कि आपने वीडियो से क्या सीखा। राइट गाइस, ऐसा ज़रूर करिए आप। तो उससे क्या होगा, उससे कुछ मुझे पता चलेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, या आपको कुछ टिप्स पूछना है कि आप कैसे याद करें या आप कैसे अपना गोल सेट करें, तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट गाइज, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत है, और आई एम रेडी टू हेल्प यू। राइट गाइज। सो दूसरा, जब भी आप नई वोकेबलरी सीखते हैं, नए वर्ड सीखते हैं, ऐसे वर्ड सीखिए जो आपको नहीं आते हैं, और जो आते हैं वर्ड उन्हें भी आप कैसे यूज करना है सेंटेंस में वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। जो भी, अगर आप 5 वर्ड भी सीखते हैं, 10 वर्ड भी सीखते हैं, तो उन्हें आप यूज करना सीखिए सेंटेंसेस में। अगर एक एक वर्ब आप लेते हैं या 5 वर्ब लेते हैं, एक्शन वर्ब लेते हैं, तो उन्हें यूज करिए। उसके लिए आप एक वर्ड के लिए कम से कम 4-5 सेंटेंसेस बनाइए। राइट गाइस। तो उससे क्या होगा, जितना आप करेंगे उसे भूलेंगे नहीं। अगर आप खाली वर्ड पढ़ लिए, आपने 100 वर्ड्स आज लर्न किए, कल को हो सकता है आपको 10 ही याद रहे, हो सकता है 10 भी भूल जाए आप। अगर किसी से बात करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 10 भी भूल जाए। राइट गाइस। सो मैं चाहता हूं कि आप जो भी वर्ड याद करें उसे आप प्रैक्टिस करें, यूज करें सेंटेंसेस में, और ट्राई करें कि वो सेंटेंस को आप स्पीकिंग में बोलें। राइट गाइज। सो ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आप कुछ भी वीडियो आप सुनते हैं, वीडियो में जो भी स्पीकर बोलता है उसे आप ऑब्जर्व करिए। वो कैसे टोन में बात करता है, स्पीकर किस तरीके से बात करता है, कैसे प्रोनाउंस करता है एक एक वर्ड को, उसे आप जरूर देखिए। दूसरा, जो भी वर्ड वहाँ पे बोला जाता है, जो टोन है, जो एक्सेंट है, उसे मिमिक करने का कोशिश करिए, उसे इमिटेट करिए, उसका कॉपी करिए जब आप बोलेंगे उसे। और हो सके तो मिमिक करने के टाइम पे उसे रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करके दोबारा जब सुनेंगे उसे तो आपको पता चलेगा कि वो स्पीकर वीडियो में कैसे बोल रहा था या बोल रही थी, और आप कैसे बोल रहे हैं। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। उस मिस्टेक को आप पकड़ सकते हैं। राइट। सो ऐसी मिस्टेक अगर होती है तो उस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिए उस पे, और आप वहां पे बता सकते हैं कि हाँ, क्या परेशानी आई है। ओके।
राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूँ। आप रीडिंग करिए, और जब रीडिंग करते हैं तो आपको लाउडली करना है। यू हैव टू बी लाउड। ओके, थोड़ा जोर से आपको बात करनी है, जिससे आप उसे अच्छी तरह से सुन पाए। क्योंकि आपने सुना होगा ना, जैसा इनपुट जाता है वैसा ही आउटपुट आता है। तो जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। और रीडिंग आपको ऐसी करनी है जिसमें, जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो। अब वो रीडिंग में कुछ भी हो सकता है। आप अगर बिगिनर हैं तो मोरल स्टोरी पढ़ सकते हैं, जिसे छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी मोरल कहानी होती हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। जो दूसरी आप, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तो बुक को आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। या फिर आप इंटरनेट पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोई ऐसा आर्टिकल आप सर्च करिए जो आपका टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट है, या आप जैसे काम करते हैं। इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल और आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपका काम क्या है, कौन सा इंडस्ट्री में है आप, उसी हिसाब से आप वहाँ पे उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को आप सर्च करिए इंटरनेट पे। तो उसी का जो, उसी से रिलेटेड जो आर्टिकल आएगा उसको पढ़िए। कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आता है तो उसका आप मीनिंग देखिए, है ना। और जोर से पढ़िए। जो भी ऐसे वर्ड हैं उसे आप नोट कर सकते हैं। अगर 5 वर्ड आपके हो जाते हैं तो 5 वर्ड नोट करने के बाद उसका मीनिंग देखिए, उसे यूज करिए, उसे देखिए आर्टिकल में कैसे यूज किया है। और उसके साथ साथ आप अपना भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आप यूज कर पा रहे हैं। राइट गाइस। सो जो भी है, आपको लक्ष्य के बारे में आपको एक गोल तो सेट करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको गोल तो करना पड़ेगा सेट। राइट। तो गोल को जब सेट करेंगे तो उसके हिसाब से आप, गोल सेट करने के बाद आप ये कर सकते हैं। राइट गाइज। तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं। गोल सेट करने के बाद आपको ये देखना है कि अगर आपने 90 डेज का गोल सेट किया है तो 90 डेज में आपको क्या सीखना है। इंग्लिश बोलना सीखना है। इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? फ्रेजेस चाहिए, न्यू वर्ड चाहिए, न्यू वोकेबलरी चाहिए। आपको लिसनिंग भी करना है, जैसा सुनेंगे जब भी बोलेंगे। उसके बाद आपको स्पीकिंग करना है। स्पीकिंग इज द मेन थिंग। स्पीकिंग नहीं करेंगे तो बोलेंगे कैसे? सो अगर आपको बोलना सीखना है तो उसके लिए तो बोलना पड़ेगा, राइट। तो स्पीकिंग जरूरी है। राइटिंग भी जरूरी है। आप राइटिंग में क्या करना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको राइटिंग में, आप सुबह से शाम तक का जो आपका डेली रूटीन है, आज का जो आपने काम किया, उसके बारे में लिखिए। आप थिंक कर सकते हैं। थिंकिंग क्या होता है? जब भी हम कुछ सोचते होते हैं हम क्या करते हैं, बात करते होते हैं अपने आप से। तो अगर हम कह रहे हैं कि मैं कल टाउन जाऊंगा, देन आप उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए अपने आप से। आई विल गो टू द टाउन टुमारो, आई विल गो टू द सिटी टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। राइट। सो उसे आप अपने आप से जब हम बात करते हैं, और कभी भी अगर आप कोई भी नया काम करते हैं तो आपके हेड में एक लिटिल वॉइस आती है ना, पीछे से बोलता है नहीं नहीं, नहीं कर पाएगा। आप बोलो मुझे हो सकता है कि अभी नहीं आता भैया, बट आई कैन लर्न एंड डू इट। जब आपके अंदर लर्निंग माइंडसेट होगा देन आप जल्दी सीख पाएंगे। राइट। सो आप जल्दी सीख सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट। जब तक आप सोचते रहेंगे नहीं कल कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, तो वो टाल मटोल है, फिर तो नहीं आएगा। कीप गोइंग, यू हैव टू कीप गोइंग। जैसा आता है, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस एंड कीप गोइंग। सो डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन। व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग, एक डू इट नाउ वाला एटीट्यूड रखिए। जो भी करना है अभी, जो भी करना है अभी, और एक टाइम पे
एक ही स्टेप करिए, एक टाइम पे एक चीज सीखिए। अगर आप एक एक काम को पूरा करते जाएंगे तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। राइट गाइस? सो आप ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। कर सकते हैं आप। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होता। कभी भी आदमी या सीखने वाला कभी फेल नहीं होता। कैसे? आप अगर जीत गए तो जीत गए, अगर आप नहीं जीते तो आप बहुत कुछ सीख गए। तो फेल तो कहाँ, फेल कुछ खोया नहीं, आपने कुछ तो सीखा ही है। कभी हम नहीं खोते। हम सोचते हैं कि हम फेल हो गए, हमारा टाइम चला गया। वो टाइम तो लगना ही था उसे सीखने में, है ना? तो बिना टाइम दिए तो सीख नहीं पाएंगे। अब किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आदमी या तो जीतता है या तो सीखता है, कुछ खोता कभी नहीं है। सो जो फेलियर होता है वो भी बहुत कुछ सीख लेता है, बट क्या होता है, लोग वही हारते हैं जो क्विट कर देते हैं, जो गिव अप कर देते हैं। जो फेलियर हो गया उसके बाद गिव अप कर दिया तो वहाँ रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। सो आगे बढ़ने के लिए उसे पार करते जाना है और उसे फेस करना है। जितना बचोगे उससे, जितना भागोगे। एक कुछ लाइन है, 3 4 लाइन में आपको बोलता हूँ। कुछ लाइनों को हम दोहराते हैं, जैसे असफलता घेरे जब, असफलता घेरे जब, असफलता घेरे जब असफलता में आप गिर जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना? जब असफलता घेर लेती है तो क्या होता है? असफलता घेरे जब, भाग मत कर प्रयास, पास ना हो धन तेरे, कार्य करने को हो अपार। कार्य करने बहुत सारे, लेकिन पास में धन नहीं है, तो भाग मत, कर प्रयास। सो हमेशा किसी भी सिचुएशन में भागना तो नहीं है, स्टॉप नहीं करना है, उस चीज से दूर नहीं भागना है, उसको फेस करके चलना है, आगे चलना है। सो जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो वहां पे आप बढ़ते जाएंगे, रुकने की तो बात नहीं होती। राइट? और जब रुकने की बात ही नहीं है तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रुकने की तो कोई बात नहीं है। सो दूसरा क्या है, जब आप इतनी सारी चीजें कर लेते हैं तो ध्यान रखना है कि स्पीकिंग जरूर करनी है। छोटे से छोटा टॉपिक लीजिए, और जब छोटा टॉपिक लेंगे उस पे डेली में 2 3 4 सेंटेंस बोलेंगे, तो उसका प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के टाइम पे ये डेली का काम है। आप ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया। डेली प्रैक्टिस में रहना है। सो यू हैव टू कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह आप शुरू करते जाइए। जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे ही आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। सो जो भी आपका कंसर्न है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है अभी, तो अभी भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को पूछ सकते हैं अभी। सो आगे इसके लिए एक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में गिफ्ट वो डाल दिया यहाँ पे, लिंक। अगर आपको एक मेरा एक ट्रेनिंग है 90 मिनट्स का, बिल्कुल फ्री है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट? और जो भी आपका
कंसर्न है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद भी आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो रिकॉर्डिंग को देख के उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी है आपका। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ये लाइव स्ट्रीम मैं यहीं तक एंड करूँगा और फिर आपसे नेक्स्ट लाइव में आपसे मिलता हूँ। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक यू।